Hello children, in this lecture we will start our discussion. Page number 11.13, paragraph number 11.4, group 14 elements, which is also known as carbon family, and the elements which are present in group 14 are carbon, silicon, germanium, tin, lead. Okay, so these are the elements of group number 14. The first heading is occurrence. Carbon is the 17th most abundant element by mass in the earth crust. It is present in free as well as in combined state. So in combined state, it is present as hydrocarbons, carbonates, carbohydrates, proteins, oils, etc. And in the free state, it is present in the form of diamond, graphite, and coal. So there are three different isotopes of carbon are present: carbon 12, carbon 13, and carbon 14. Carbon 14 is used for the carbon dating, radiocarbon dating, or simply carbon dating. Then silicon is the second most abundant element on the earth crust. It is widely distributed in the form of silica, silicates, etc. Silicon is very important component of ceramics, glass, and cement. The chief ore of lead is galena. The formula is PbS. Ultra pure germanium and silicon. These are used in the transistors and semiconductor devices. The next heading is electronic configuration. So the outermost shell configuration of 14 group elements is NS2, NP2. So here N is number of the outermost shell. So outermost shell is having 2 electrons in its S subshell and 2 electrons in its P subshell. Okay. The next point is electronegativity. So electronegativity decreases from up to down in the group from carbon to silicon, and after this from germanium to lead. It is remains about constant. Okay. So there is no much change in the electronegativity from germanium to lead, and it is due to the filling of n minus d orbitals and n minus 2f orbitals, which are having less shielding effect, and that is why outermost electrons are having comparatively more a nuclear charge or nuclear force of attraction towards them, and that is why there is no very much change in the electronegativity of these elements. So their electronegativity is nearly equal. Okay. Next is melting and boiling point. So ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स से ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रुप में अप टू डाउन डिक्रीज होता है. लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड इज मोर देन 10. द नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 14 एलिमेंट्स का, दैट इज मच हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग 13 ग्रुप एलिमेंट्स, and it is a general trend in the periodic table. But one exception is there. The first ionization enthalpy of lead is more than 10, और ये इसलिए होता है क्योंकि
न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेड का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टिन। तो टिन से लेड का न्यूक्लियर चार्ज क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि टिन में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो इसलिए लेड का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो टिन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कंडीशन जो है ये नोबल गैस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है दो तरह से। एक तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड हो जाए आके, तो जो अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 ऐड होते हैं तो 4 माइनस कंडीशन बन जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 4 प्लस कंडीशन को अटेन किया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पॉसिबल है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। बट होता क्या है कि जो कार्बन है वो 4 प्लस आयन फॉर्म नहीं करेगा या 4 प्लस आयन फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि 4 प्लस चार्ज के लिए इसे जो है ना लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, और उतना एनर्जी सप्लाई कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसकी 4 प्लस कंडीशन फॉर्म नहीं होगी। 4 माइनस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट फॉर्म्ड बिकॉज C4 माइनस इज हाईली चार्ज्ड स्पीसीज and moreover its formation require large amount of energy for adding 4 electrons. So 4 minus condition is also not possible, but ऐसा है कि कार्बन जो है वो C4 माइनस या C4 माइनस कंडीशन में कुछ कंपाउंड्स में एज अ कार्बाइड एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बाइड। ओके, देन जो अदर एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो अदर एलिमेंट्स हैं वो 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सिलिकॉन का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 ही है। जर्मेनियम, टिन और लेड ये +2 एंड +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट इनट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स। ओके, तो यहां पर टेंडेंसी टू शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी जो है वो उसका सीक्वेंस दे रखा है। सो इट इज 10 इज मोर देन लेड, सो कार्बन टू लेड ये टेंडेंसी जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, और टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है उसका अपोजिट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी। ठीक है बच्चों, देन टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स। सो जनरली इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स डिक्रीजेस एंड टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स इंक्रीजेस। ओके, मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, और इन्हें हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये जो है ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का काम करेंगे ना ही इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, देन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, सो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों एजेंट का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और उनका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मोर स्टेबल है, तो ऐसे एलिमेंट ग्रुप 14 के क्या करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। लेकिन अगर इसका रिवर्स है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है,
तो ऐसे ग्रुप 4 एलिमेंट्स क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स दोनों तरह के कैरेक्टर दिखाते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जर्मेनियम इज मोस्ट स्टेबल, देयरफॉर जर्मेनियम 2 सॉल्ट्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि जर्मेनियम का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, तो जर्मेनियम के जो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के कंपाउंड्स होंगे वो +4 में आसानी से कन्वर्ट होंगे, +4 स्टेट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसीलिए जर्मेनियम जो है ना, जर्मेनियम के वो कंपाउंड्स जो इनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन टिन और लेड में क्या हो रहा है, टिन और लेड वो जर्मेनियम से अपोजिट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। टिन और लेड में क्या है कि इनके जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स हैं टिन और लेड के, वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हैं, एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स मोर स्टेबल हैं। तो लेड और टिन के कंपाउंड्स आसानी से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो कंपाउंड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेंगे। देन chemical properties of group number 14 elements, and the first is reactivity towards oxygen। तो कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। बाकी जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हैं उनके डाइऑक्साइड ही फॉर्म होते हैं। मोनोऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कार्बन और सिलिकॉन एसिडिक नेचर के ऑक्साइड हैं, और ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। टिन ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर, और ये दोनों से रिएक्ट कर रहा है, एसिड और बेस दोनों से, अनरिलेटेड सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज reducing and oxidizing power of the oxides. So group 14 elements oxides are also behave as strong oxidizing and reducing agents. For example, in the case of carbon is itself most stable in +4 oxidation state. So compounds of carbon which are present in +2 oxidation states are easily get converted in the form of +4 oxidation state. Okay, and that is why the compounds which are present in +2 oxidation state of carbon are a strong reducing agent. As for example, in the case of carbon monoxide, it is a very strong reducing agent and very commonly used in the extraction of metals to reduce metallic oxides in the form of metal. Okay students, same way lead is most stable in +2 oxidation state, and that is why lead is most stable in +2 oxidation state, and that is why +4 oxidation state of the compound of lead easily converted in the form of +2 oxidation state. Okay, so that is why compounds of lead in +4 oxidation state are a very good oxidizing agent. For example, lead oxide when reacts with HNO3, lead nitrate, water and oxygen is formed. Okay, in the second case, lead oxide with HCl is forming lead chloride, H2O and Cl2. So here in this reaction, according to this reaction, this lead oxide oxidized HCl in the form of chlorine, whereas PbO2 itself reduces in the form of PbCl2. Okay students, next is fifth point, reactivity towards halogens. So elements of group number 14 form
MX4 type of halides. For example, CCl4, SiCl4, SnCl4 and so on. Okay, but stability of the tetrahalides decreases from up to down in the group. So carbon tetrachloride will be most stable, whereas lead tetrachloride will be least stable. Okay, students, then ionic character and thermal stability of the tetrahalides of a given element of group 14 decreases with the increasing atomic number of the halogen. So two things are given in this point. First is ionic character and the second is thermal stability. So as far as the size of the halogen atom will increase, as you know that size of chlorine is less than bromine and bromine is less than iodine. So as far as size of halogen will increase, the thermal stability and ionic character of tetrahalides will decrease. Okay, so the same element with different halogen. So as size of halogen is increasing, ionic character and thermal stability is decreasing. Then next point, the tetrahalides of group 14 elements are covalent compounds and with tetrahedral shapes. Then except CCl4, all other tetrahalides get hydrolyzed with water, and it is due to the presence of d orbitals in all other elements of 14 group elements except carbon. Okay, so carbon is not able to expand its octet due to the absence of d orbitals, and that is why carbon tetrachloride is not get hydrolyzed with water. Except carbon and silicon, dihalides of these elements are also formed. Okay, so carbon and silicon are forming only tetrachlorides or tetrahalides, but rest of the elements are also forming dihalides. Then a lead dihalide is more stable than lead tetrahalide, whereas reverse for the germanium. Germanium dihalide are more stable than germanium tetrahalide, and this is due to inert pair effect. It is due to inert pair effect. Okay, then tin tetrafluoride and lead tetrafluoride are ionic in nature, whereas lead tetraiodide does not exist. Next point, central atom in all tetrahalides is sp3 hybridized, except tin tetrafluoride and lead tetrafluoride, because these compounds are ionic in nature or electrovalent compounds. Okay, students. Then the central atom accepts lone pair of electrons from water molecules in d orbitals of silicon or tin. So in this way, the halides of silicon and tin are forming coordinate compound with water.